If you're going through some hard times, you actually need to listen to this because this video is going to be important for you. The thing is, जब hard times तुम पे आते हैं ना, तुम क्रम्बल करने लगते हो, तुम्हारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी तुम्हारी क्रम्बल डाउन होने लगती है, तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार वो एक तुम खुद से बात करते हो ना, एक कॉन्वर्सेशन तुम्हारी क्लियर हो जाती है when you're at the bottom rock. You know, I have had that feeling, and that is the reason why I'm making this video. The thing is, what if I tell you, every great warrior, every great king, every great person who has achieved something very exceptional in life had gone through that. Every warrior has felt it. सारे warriors को तुम देखते हो who are exceptionally good at their battlefield, exceptionally good in their battlefield. They have nightmares. They have certain kind of things. But instead of victimizing that particular thing कि यार मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, you know what they do? They just use that particular thing. They just use it as the fuel. And this is the thing which most of the people they don't get. You know, you have a goal. I know, तुम्हारे पास एक गोल है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो, तुम चाहे अपना बिजनेस है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो, relentlessly तुम काम करे जा रहे हो. But कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहां पे तुम्हारा बिजनेस, you know, it is like not working. It's like not working. You know, I know that feeling when your business is not working, जब तुम्हारे, you know, जो कुछ तुम्हारे employees है, वो साथ में काम नहीं कर रहे, तुम्हारे employees पे, you know, जो काम का उनका कंट्रोल रहता है, वो छूटे जा रहा है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे अराउंड होते हैं, तुम्हारे अराउंड एक chaotic scenario होता है. But what if I tell you, all of that things which happen to you, and specifically the bad things which happen to you, it gives you a certain kind of tolerance level. Because when you achieve something in life, you will not, वो तुमसे छूटेगी नहीं till the time you'll die or till the time you'll become complacent. The hard times which you are actually going through is building you a certain kind of tolerance level. I like to go through with an example. तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करनी है, या तुम्हें बहुत किलोमीटर भागना है, या तुम्हें एक मैराथन रन करनी है. You have to go through some shitty phases. You have to actually go through some hard phases in your life. जहाँ पे you have to cut down that junk food. You have to stop seeing women. You have to actually lock in. You have to actually focus on yourself. You have to actually go to the gym even if you don't feel like it. But you still do it regardlessly. And तुम देखते हो at the end तुम्हारी body बहुत ज़्यादा chiseled है, बहुत ज़्यादा aesthetic है. And you'll feel grateful about it. But here's the catch. When you will be complacent about it, तुमसे वो चीज छीनी जाएगी. And this is the thing which most of the people don't know. Most of the people, they quit during the hard times. For example, तुमने हाईवे देखा है. हाईवे में बहुत सारे एग्जिट गेट्स रहते हैं कि यहाँ पे एग्जिट करना है, वहां पे एग्जिट करना है, ये है. एग्जिट गेट्स तुमने बहुत ज्यादा देखे रहेंगे हाईवेज में. अगर तुमने वो एग्जिट गेट पकड़ लिया वहां से, you're not going to go to the desired destination. Fine, अगर तुम्हारा desired destination कुछ और है, then it's your choice. But if you truly want to achieve something exceptional in life, here's the thing, you have to go through some rough times. Because here's the thing, चीजें ना तुम्हें दो तरीके से मिलती है हमेशा, दो हिसाब से तुम्हें चीजें मिलती है. One by luck, which is either your daddy's money, you know, the rich brats which I'm talking about, and या तो तुम्हारा फैमिली, तो तुमको जनरेशनल वेल्थ मिली है, या तो तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा वेल्दी है, ये सारी चीजें. सो यू गेट व्हाट यू एक्चुअली वांट. यू डोंट गेट व्हाट you get what you actually want, you know. But here's the catch, one more catch. वो चीज तुम्हारे पास ज्यादा देर टिकेगी नहीं, because the more easily you get things, the more value you don't have, and as a result you don't maintain it. वो टॉलरेंस लेवल जो चीज मैंने बात की थी ना कि टॉलरेंस लेवल है तुम्हारे अंदर, वो टॉलरेंस लेवल बिल्ड करता है तुम्हारे अंदर ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स. वो एक चीज पर्टिकुलरली ऐसी है जो तुम्हें थ्रू आउट योर लाइफ मेंटेन करना सिखाएगी चीजों को. हार्ड टाइम्स में तुम्हारे अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्ड हो जाता है. हार्ड टाइम्स में तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस बिल्ड हो जाती है. हार्ड टाइम्स में तुम्हारे अंदर एक ऐसा टॉलरेंस लेवल बिल्ड होता है, चाहे वो मरने तक वो तुम्हारे साथ चीज वापस रहेगी, मरने तक वो चीज वापस नहीं जाएगी. Whatever things you believe in, either it's your God, it's your universe, it's your consciousness, whatever things you believe in. If you're religious, not religious, it doesn't really matter. But if you want to truly achieve something exceptional in life,
You have to go through that hard phase. And in that shitty phase, you are actually building what I call is tolerance level. जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अगर तुम्हें 5 की जगह तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है, यू हैव टू गो थ्रू पेन. तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स में क्रैम्प आएंगे, तुम्हारे काफ्स में क्रैम्प आएंगे, बट यू हैव टू स्टिल गो थ्रू दैट हार्ड फेज टू ट्रूली अचीव समथिंग एक्सेप्शनल इन लाइफ. एंड दैट्स वेर यू अचीव दैट. Keep that in mind. Don't quit during hard times. Don't quit because times are just hard. Every warrior has felt that moment. Every single guy who has done great in history, who has actually made history. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तानाजी मालसुरे, ये जो सारे लोग हैं, महाराणा प्रताप, बहुत सारे अनगिनत वॉरियर्स हैं हमारे. They have all gone through that phase where nothing is working, and they tried and tried and tried, and they have built a certain kind of level, and boom, they have got it because they have earned it. So keep that in mind. Stay on the hard path. I don't want you to quit. That is all I want. I genuinely am rooting for you. Goodbye and Jai Hind.